अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। तव्हां अखरोट ज़रूर ॾिठो हूंदो, ॿाहिरों इलाही सख़्त अंदरि नरम। अॼु असां जंहिं शख़्सियत सां तव्हांजी मुलाक़ात था करायूं, पंहिंजी ज़ात में इंतहाई मुनफ़रिद, हू पंहिंजे लेखे हिकु तारीख़ आहे, पाकिस्तान जी, हिन मुल्क जी ऐं जंहिं सूबे में हिन महिल हू मौजूदु आहे, संदन ज़िक्र करण खां बग़ैर उहा तारीख़ पूरी नथी थी सघे। रिवायतनि जो अमीन, इंतहाई बावक़ार, इंतहाई मुनफ़रिद, नवाब अकबर ख़ान बगटी साहब। नवाब साहब, तव्हांजी महिरबानी, तव्हां असांखे पंहिंजो वक़्तु ॾिनो आहे। मां जहिड़े नमूने सां तव्हांजो तारुफ़ करायो आहे, इहो मुंहिंजो तव्हां सां थोरो जेका हाणे रिकॉर्डिंग खां अॻु में ॾेठ वेठ थी, मुंहिंजो पहिरियों तासुरु आहे। तव्हांजी शख़्सियत जो रोब दबदबो एतिरो आहे जो माण्हू ईअं सम्झंदा आहिनि तव्हां शायदि खिलंदा बि न आहियो। तव्हां खिलंदा त आहियो? हा, कॾहिं 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 खिलंदा आहियो। ॻाल्हियूं तव्हां सां इलाही करणियूं आहिनि। मूंखे तव्हां पहिरीं तव्हांजो जेको कबीलो आहे, बगटी कबीलो, जंहिंजा तव्हां सरदार आहियो, ऐं माशाअल्लाह मां सम्झां थी 70 सालनि खां वधीक अरसे खां तव्हां इन जी सरदारी संभाली आहे। 12 सालनि जी उमिरि में तव्हांखे सरदार कयो वियो हो? 12 सालनि जी एॾी नंढी उमिरि में? वालिद साहब फौत थियो न 1939 में। जी जी। तो ट्राइब कबीला दस्तारबंदी कयो, सरदार कयो, बट ऑफिशियली पोइ एक सरबराह भी मुकर कयो, जीअं रीजेंट जंहिंखे चवंदा आहिनि। ही वॉज वर्किंग जेतिरे ताईं मां स्कूल में होसि। अच्छा। बहरहाल सरदार मां होसि। सरदार मतलब तव्हां इन सरदारी जे लाइ तयारु हुयो, तव्हांखे तयारु कयो वियो हो? तयारी त हाणे नंढकाई में जीअं दस्तूर रिवाज रस्म आहिनि, हुन सां रूटीन, हा, कुझु वाक़फ़ियत हुई। स्कूल खां मोटी आए बि वरी मोतबर हुआ, पौड़ा माण्हू हुआ, उन्हनि जे कंपनी में नेचुरली वन पिक्ड अप एंड रस्म रिवाज वग़ैरह, तो इट टुक सम टाइम। साईं, पंहिंजे कबीले जे मुतालिक़ कुझु ॿुधायो, बगटी कबीले जी का तारीख़, कुझु हुन जो बैकग्राउंड, पस मंज़र? जी, बगटी कबीला इज पार्ट ऑफ द बलोच नेशन एंड बलोच मुख्तलिफ वक्तन में फ्राम ईरान, ईस्टर्न ईरान, सेंट्रल ईरान, हुतां लॾे आया फॉर डिफरेंट रीज़न्स। कॾहिं प्रेशर पियो, कॾहिं जंग जी वजह, कॾहिं ॾुखार जी वजह खां, त पोइ वॾो माइग्रेशन थियो 12th-13th सेंचुरी में। मीर जलाल ख़ान वो जो बलोचन जो सरदार हो हुन वक़्त जो। दैट डज़न्ट मीन कि दुनिया में जेतिरा बलोच आहिनि सब जो सरदार न। तो हुनजा पुट हुआ 4, हिकु धीउ हुई, त हे सभु थ्रू मकरान, किरमान खां मकरान आहे, मकरान स्प्रेड आउट करे कुझु हुते रहिजी विया, कुझु हेॾा कलात खुज़दार हिन रास्ते खां आया, सेवी, झलमगसी, कच्छी जे इलाइक़े में, हिते डिफरेंट टाइम्स, को कलात में हुआ, मस्तुंग में बि आबाद हुआ। तो हुनजो जो सरदार हो, चाकर हो, अची सेवी में, तो पोइ पंहिंजे पान में हुनजो जंग जदल हो रिंद और लाशारी जो। लाशा और रिंद भाउ हुआ। 3 साल जंग जे नतीजे में वो माइग्रेट करे विया, चाकर वियो हेॾां सतगरा जो ज़िला मोंटगोमरी में आहे, हुनजो क़बर बि हुते आहे। एंड गोहराम जो लाशार जो सरदार हो, वो लॾे वियो गुजरात जो, हिंदुस्तानी गुजरात, होॾां वियो। हुनजो क़बर बि ख़बर न आहे, हुनजा जेको औलाद मौलाद हुनजो को ख़बर न आहे। इहा ख़बर न आहे त गुजरात में वियो त ज़रूर हुनजा ॿार बच्चा हूंदा, औलाद हूंदा।
بلوچ آہن چون تا آہن مگر کنسنٹریشن نہ ہے سندھ میں آہن لاشاری گھنا آہن کافی آہن آل اوور بٹ ہے پان ویو ہوڈا گجرات جے علاقے میں ویب تھی ویو تو پو ہے کانفیڈریسی جو ترٹ جو نا بلوچ جو Rind and Lashar, then different tribes who formed the confederacy, they separated and formed their own sardaris at different places. So, tribal society mein something large when it breaks, poor smaller ones, constituent parts of it, they take over and form themselves into the tribal system. بگٹی یا مری یا لیگاری یا مزاری یا دریشک کا سب الگ الگ تھی ہر کے پانچی پانچی سرداری قائم کئی پانچی سرداری that is how اتا بگٹی جو انہن میں جکو آہے قبیلو ان جی اہمیت ان جی حیثیت ہانے مچاچو اہمیت جی بارے میں ہو تو کو قبیلہ وڈا ہیں کو ننڈا ہیں کو numerically ایریا وائز سانجے ایریا بگٹی علاقہ ہے قریب 4000 مربع میل مری سانجے بھرسا ہیں سانجے پاڑے سری بیا ہیں ہن جو علاقہ نیومرکلی اساں کھاں گھنا ہیں زیادہ ہیں کچھ علاقہ ان جو 3800 مربع میل ہے اینڈ باقی بلوچستان میں جترے بلوچ ہیں بر یعنی اتے ڈکار تیندو یا کو مصیبت یا جنگ جدل لڑے ویندا سندھ موٹی ایندا سمجھو 100 گھر ویا ہیں تو 80 موٹی ایندا بھی سندھ میں رہی ہن خاطر سندھ میں تو انڈے سو بلوچن جو گھنا بھائیو پوچھण واری ہے بلوچن جو الہی ذاتیوں الہی پاڑا جے کے سندھ میں سب ہیں کئی پاڑا یہ سندھ میں آہن جو بلوچستان میں کو نہ ہیں بالکل نہ ہیں اتے آباد تھی تو ہن نمونے سے پنجاب میں بھی گھنا ہیں بلوچ سندھ کا بلوچستان کا سندھ میں بلوچ گھنا ہیں بلوچستان کا پنجاب میں بلوچ گھنا ہیں اچھا جے کہ سب موٹی اچن تو شاید جو علاقہ ہے سو علاقہ تو وڈو ہے وہ سسٹیننس نہ ہے سسٹیننس what could be the reason maybe the climate maybe climate بھی خشک سالی بارش بھی 2-3 inches a year rainfall پو دریا یا نہر یا آبپاشی جو کیا نہ ہیں ایک زمانے میں بلوچ ہوندا nomads and with their herds. Once they started settling down, hane bhi, they are semi-nomadic, semi-settled. So then living, mushkil thindo, people will go to other plains and they don't come back. So therefore the abadi got thi and it is still less. Even now, they don't come back then. This has been going on since long. But there were other Baloch who were in Punjab. If you read now Babar's memoirs, he says when I entered Hindustan, I met so-and-so Baloch Sardar, so-and-so Baloch, they supported me. Uske Babri mein bhi yo likho aata, wahan Baloch Sardar in central Punjab. Then he goes below Delhi, central provinces. He comes across Baloch Sardar there who support him. He names them, but Pado jo zikr na hai. So that means when Chakar and company were settling down here, other Baloch were already in small pockets, let us say. They had their own powerful fiefs and their areas. تو ان کا اگ میں وہ پو ہنن سا واسطو نا there were other Baloch, not Rind or Lashari but different Baloch, but Baloch nevertheless. Baloch nation جو تو ہے نا ان میں تو سب ہیں. سائیں پانچ والد صاحب جو متعلق کچھ بدھائے جو جی والد صاحب اور سردار
from early this century, last century, and he died in 1939. And then I was declared Sardar. Well, केतरी उम्र में उन्हनि जो इंतकाल थियो? He died in, but before the age of 60. 60 का घट हो जी। ता पाण में केतरा भावर भेण? ब भावर? हाँ। भेनरूं? भेण 4 भेनरूं, ब भावर। ता वॾा? हाँ। इन्हीं करे सरदारी तव्हांजे हिस्से में आई। अच्छा, भला तव्हांखे वालिद साहब पढ़ाई जे लाइ किथे मोकिलियो? शुरू में पढ़ाई ते डेरा बुगटी में, वरी थोरो डेरा बुगटी में उन ज़माने में छा स्कूल हुया या मक्तब हुया? न स्कूल हो, रेगुलर स्कूल, बट मुझे ख्याल में लोअर मिडिल स्कूल हो। अच्छा, प्राइमरी जीअं थींदो आहे? प्राइमरी का मथे 7 दर्जा? न 5 या 6 या something like that. ठीक है। More than just the ordinary primary. तो then कोयटा, उन्हाले में कोयटा गर्मी जे मौसम में, तो होते भी स्कूल में हो 1 साल, वरी हिते मोटी आयो। then कराची वठी विया, तो मेजर बर्च अंग्रेज हो, हुन सां रखियो हो। असांजो गार्डियन हूंदो हो हुनजे घर में, एंड भरिसां स्कूल हो को प्राइवेट रोज़ेरियो स्कूल। अच्छा। हुते असां पढ़ियो थोरो टाइम कराची में जी। तो वरी बर्च साहब हली वियो वलायत, तो हुनजे भरिसां ॿिए हिकु गोवानीज़ लेडी हुई, हुनजी नालो बि हुई मिसिस रोज़ेरियो। She was a widow, so. अच्छा, वो जो रोज़ेरियो स्कूल हुयो सो? न वो जुदा हो। That was different. But she was again रोज़ेरियो. हाँ, नालो कॉमन हुआ। तो मालूम she was the owner of the school. नहीं हुनसां को वास्तो न। अच्छा। थोरो वक्त हिन सां हुआ, तो हुन खां पोइ वरी अलामा आई काज़ी साहब वटि असांजो वालिद साहब असांखे रखियो। अलामा आया काज़ी साहब जिन उन ज़माने में कराची में हुया? कराची में हो, घर हो सोल्जर बाजार में। अच्छा। सोल्जर बाजार का मेन बाजार का बस स्ट्रीट्स जी हेठा अंदर जे तरफ जी मानक जी स्ट्रीट जी पिस्टन जी हाउस, मूंखे नालो बि यादि आहे। पिस्टन जी कोई पासी जो हूंदो, बारसी जो, तो हुते असां रहंदा हुआ। काज़ी साहब वटि जो विया, तो हुते मीर सुंदर खान सुंदरानी, चीफ सरदार ऑफ द बुलेदीज़ हो, ऑलरेडी हो हुते असां खां अॻु में। तो वो जाम मुराद अली, जाम मल्हीर जोखिया सरदार जी, वी वर ऑल यतीम्स, सब यतीम। वालिद साहब फौत थी वियो हो। तव्हां जेको पढ़ण आया हो वालिद साहब जे वक्त में पढ़ण, बट देन सून वी बिकेम यतीम्स 39 में। जी जी जी, तो अबाउट 38 या समथिंग लाइक दैट। अच्छा, उन खां पोइ भी तव्हां पढ़ाई जारी रखी? हाँ। अच्छा। तो जाम साहब वो पोइ गिरोह शरीफ फ्रॉम द डेजर्ट दरगाह जो सैयद बादशाह जो पुट हो अहमद शाह जो, उनजो पुट अब्दुल्ला शाह, वो भी काज़ी साहब वटि आया। एंड जीएम सईद जो पुट, I can't call him what he deserves to be called, but anyway, he was there. अमीर हैदर शाह। एंड पोइ नंढड़ो असां खां नंढो, पोइ ॿिया बि लालकाने खां हिकु छोकिरा आहे कुहावड़ छोकिरा, नसार एंड मुख्तार। माशाल्लाह। मुख्तार तो असांजो डॉक्टर आहे, हाणे छा अखनि जो आहे शायदि हैदराबाद में, डॉक्टर मुफ्ती। निसार नालायक हो उन वक़्त बि, हाणे बि शायदि बेकार आहे। एंड हिकु ॿ पोइ खोसा छोकिरा आया, दरिया खान खोसे जो भाउ शाह ॾिनो, सुबुह सादिक हाणे मुल्लो आहे। एंड बसि ही हुआ। पोइ 39 में असांजो वालिद साहब गुज़ारे वियो, तो गवर्नमेंट पोइ असांखे मोकिलियो चीफ कॉलेज लाहौर, HSN चीफ कॉलेज। मूंखे मुंहिंजो भाउ फ्रॉम ग्रामर स्कूल, वी वर इन ग्रामर स्कूल,
कराची में तव्हां ग्रामर स्कूल में हुआ, वो गवर्नमेंट असांखे मोकिलियो लाहौर चीफ कॉलेज। बाक़ी साॻी हिते हुआ, बट छुट्टी में वेकेशन जे वक़्तु वरी असां काज़ी साहिब वटि ईंदा, नॉट टू डेरा बुगटी। अच्छा, तो 4-5 साल असां तकरीबन उते ही रहे, उते ही काज़ी साहिब वटि। ही वाज आवर स्टिल आवर गार्डियन। काज़ी साहिब तव्हांजा गार्जियन रहा ऐं उते एल्सा काज़ी हुई जी, जंहिंखे प्यार मों सिंधी ख़ासि तौर ते मदर एल्सा चवंदा आहिनि। Yes, we used to call her mother. You used to call her mother. Yes. काज़ी साहिब जिन जी तबियत मिज़ाज कीअं हुयो ऐं एल्सा काज़ी खे तव्हां कीअं ॾिठो? तव्हांखे टाइम वधीक केरु ॾितो? एल्सा काज़ी ज़्यादा टाइम ॾींदी, being a lady, being a woman and a German woman. German women are, you know, in Europe they are known as most efficient housekeepers and looking after children and house and all that. So she proved that. Kazi Sahib was on a different plane, and he used to be with his own peers, like Dr. Halipot, Dr. ॿियो बि हाली पोटो, ॿियो हिकु उनखां अॻु में हो डॉक्टर ॿियो पोटो, सम आई कांट रिकलेक्ट, ही इज डेड लॉन्ग अगो। जी जी, हो कॉन्स्टेंट विजिटर हो। ब्रोई साहब भी ईंदो हो, ही वाज अ पुअर स्ट्रगलिंग लॉ स्टूडेंट। उनखे काज़ी साहिब रखियो संजो प्राइवेट ट्यूटर, 3 रुपया। तव्हांखे एके ब्रोई साहब पढ़ाईंदो मूंखे मुंहिंजे भाउ खे ॿई। तो 3 रुपया पगार हो जो महीने जो। तो एजीएन काज़ी आफ्ताब, वो काज़ी साहब जो नेफ्यू हो, वो भी असांखे पढ़ाईंदो मगर फ्री। तो उनजे मोटरसाइकिल ते मां मोटरसाइकिल ड्राइविंग भी सिखियो। उन मोटरसाइकिल बची न, उनखे काफ़ी ज़रब आया, lot of dents and all that, but I learned how to drive. And Kazi Sahib then Sham window of long walks with his these but mostly, you know, academic people, unan sound jo male mulaqat. And Elsa Kazi, naturally she would look after us, even tuck us into bed at night and make sure we were in bed, and then go back upstairs. तव्हां सभु ॿार साईं के सभु शरीर हुयो, शरीफ़ हुयो, तंग कंदा हुयो? न, हुन वक़्त में हेतिरो तंग करण जो कोन हो। वी यूज्ड टू पंहिंजे पाण में यूज्ड टू हैव, बट हुननि सां हेतिरो तंग मंग कोन कंदा। देन she appointed a piano teacher to teach us piano, and मूंखे नालो विसरी, she was also a Guyanese woman. And other, you know, cultural things, because being a proper German, she herself was highly accomplished lady, highly accomplished, more than Kazi Sahib. Although hitte thane male society ya jate kaate Kazi Sahib jo yani Kazi Sahib day flana day, but I must say Sahitra Sal insan what I found her much more accomplished, highly on a high level. बात मो इहा ॻाल्हि ॿुधी सुठो थो लॻे त मेल सोसाइटी मर्दनि जी जो माशरो आहे ऐं उन में हिकु औरत जी तारीफ़ तव्हां कयो था, हुनजी सलाहियतनि जा बि मोतरफ़ आहियो। इहा ॻाल्हि तव्हांजी बात मो सुठी थी लॻे। सही ॻाल्हि न, असली ॻाल्हि आहे त काज़ी साहब इवन अ टेबल, डिनर टेबल जी वो किस्सा सुनाईंदी, यानी her own creation there and then. For, you know, fail badi, she would keep creating. कहानी शुरू कंदी. Next night she would start off from where she had left off previous night and continue. So it was wonderful. We were very much, you know, fascinated. ग्रामर स्कूल में तव्हां पढ़ियो, उते तव्हांजा केरु हुया दोस्त साथी जेके तव्हांखे यादि हुजनि ग्रामर स्कूल में? सभु मुंहिंजे ख्याल में कुझु जेके अहिड़ा हुजनि प्रोमिनेंट न आहिनि। उते को एजुकेशन हो, दिस वाज इन 38-39, हो तो अंग्रेज जो ज़मानो लॉन्ग बिफोर पाकिस्तान। अंग्रेज छोकिरा हुआ, एंग्लो इंडियंस हुआ,
थोड़ा घणा कुछ देसी हाणे एक असांजी क्लास में एक छोकरी हुई थुली and with pigtails, and she's still prominent because she was very plain and all that, and she was called Punjabi. She was apparently from Punjab, so they said Miss Punjabi. Miss Punjabi is not a name, so I don't remember her name because everybody said Miss Punjabi, so she became Miss Punjabi. I used to pull her pigtails and all that, tease her. छोटी वो करी नाराज कौन थी? ना अच्छा वो क्यों कर रहे हो क्यों पंजाबी. then the Parsi girl मिस घोड़ा गाड़ी वाला. अच्छा तव्हां सभिनी खे हुनजे असां जेको घोड़े गाॾीअ में ईंदी हूंदी? No, her family name was घोड़ा गाड़ी. like बाटली वाला, like this वाला. ख़ास तौर ते पारसी जेके आहिनि से पंहिंजे धंधे पुठियां सुञाता वेंदा आहिनि. मिस कॉन्ट्रैक्टर, मिस्टर दारू वाला. So this was her, probably her grandfather was selling baatlis in the street, you know. So Miss बाटली वाला, not बाटली वाला, and so this was घोड़ा गाड़ी वाला. They had घोड़ा गाड़ी. So अंग्रेज छोकरी हुआ, एंग्लो इंडियन छोकरी हुआ, छोकरा छोकरियुनि में का तव्हां इलाही घणी वणी हुजे? हाँ नहीं मूंखे यादि बि न आहे. न यादि हूंदो, पक यादि हूंदो. Of course there was one girl वो असां खां वॾी हुई, वॾी क्लास में. हो यादि आहे ताईं. छा नालो? मिस बाबरा थडानी. थडानी हुनजी पियो हुई सिंधी हिंदू. एंड प्रॉब्ली को जज हो या छा हाई कोर्ट में. उनजी माँ हुई वलायती अंग्रेज हुई या ॿिए. एक्सट्रीमली प्रिटी. एंड सब जेतिरा बि स्कूल में छोकिरा, एवरीबडी वुड बी वॉचिंग हर एंड लुकिंग एट हर. इवन यूसुफ हारून, महमूद हारून एंड ऑल. हे हुआ एंड हिदायतुल्ला जो पुट छा नालो आहे? Is he still alive or is he died? Ghazanfar? Anwar Hidayatullah. Is he? Yes. He's still alive. Yes, he's still. So they would all be eyeing her. They were of course senior to me, but common factor है वो ना जो whenever she passed everybody would be oogling. And our teachers were also mostly Europeans or Anglo-Indians. सुमरो साहब तो चए थो त मां उन छोकिरीअ खे ॾिसण लाइ वेझे ॾिसण जे लाइ स्काउट में भर्ती थियोसि, छो त स्काउट्स हूंदा हुआ उन्हनि खे. खैर हे असांजे स्कूल में न हो. We didn't know him. We knew those who were in our school. And this girl Barbara Thadani, she lived near our house at the end of Soldier Bazaar near Guru Mandir. The house was green in color outside, external, and it had a hard court, tennis court, you know, cement jo. So from there one could see they were well off and all that. And once or twice she invited us to. We went inside and they were playing tennis. And we watched. Gave us a glass of sharbat or something like that. I still remember that. जैसे लाहौर में तव्हां केतिरो अर्सो रहियो? लाहौर में 40, 41, 44 ताईं, end of 44. अच्छा. And छुट्टी में वरी काज़ी साहब वटि ईंदासीं. 2 साल गर्मी जी छुट्टियुनि में, सो लेंथ कोई 2.5 महीना पौने 3 महीना. We were taken, Qazi Sahab, all these boys to Solan in the Shimla hills. Solan जो मशहूर है ना, वो जो ब्रूरी भी आया, ब्रूरी जे नालो तो मशहूर है. Actually, Solan is capital of a small hill state called Bhagat. Bhagat state जो दालफ्राफ वो. And rail जो शिमला यानी कालकाता शिमला train service be it passed through and main road be passed through. Very nice, very good climate. And होते भी काज़ी साहब रखियो असांखे जो राजा हो उन जो चाचो, he was our private tutor.
Qamar Sahib. I don't know his name, but since Qamar is, like a Shahzada or something like that title, so we also remember him. Kunwar Sahib. Ji? Kunwar Sahib. Acha. Very extremely sharif manu, extremely, had kan zyada. I've never seen very few people who were as sharif as him, this gentleman. He was a private tutor. I don't know how much salary he was being given, but bas saal asam vyase unali mein choti zamane mein hote. It was very nice. We used to go out for long walks on the hilltops and all that, and Qamar Sahib would be teaching us and taking us to the small clubs, playing badminton and all that, and like simple, Sindhi vadera under darmiyani type. They didn't have much opulence. When the fellow, this was how he was keeping himself afloat by, teaching and all that. So you can well imagine कि यानी तेरे वॾे ख़ानदान जे घर खां पोइ बि गुज़र सफ़र जे लाइ ट्यूशन्स कंदो हुयो, ॿारनि खे पढ़ाईंदो, उतां पैसा मिलंदा। अच्छा साईं, पोइ तव्हां वालिद साहब जे वफ़ात खां पोइ अची वियो डेरा बुगटी? न त we were in college. You were in college? After father died, you became in 39 from Karachi Grammar School, the government was our guardian. Then they Sindh Court of Wards, Sanjay Zameen Sindh wara Court of Wards, Sindh Court of Wards, Balochistan, and Punjab mein Zameen Balochistan, jo political agent was our Court of Wards. And they sent us there. After 1944 was the first time I came to Dera Bugti, from 39. 39 खां पोइ 44 में 44 जे December छुट्टी, winter holidays first time. छा पढ़ी आयो, छा कंप्लीट करे आयो? कंप्लीट कोन कयो, असां ताईं जूनियर कैम्ब्रिज ताईं पढ़ियो। ठीकु आहे। और हुन वक़्तु मूंखे यादि आहे असांजो सिंध कोर्ट ऑफ वार्ड जो मैनेजर हिकु थुल्हो हो, क्रिश्चियन ज़ाल हुई हुनजी, थुली एंड कारी एंड खोजी। I don't know how he had this love marriage with her. काजी साहब वटि ईंदो हो न, काजी साहब सॼी गाॾी न हो, त हुनखे हिसाब किताब करण कि बाबा छा ख़र्चा आहे छा, मूंखे हाणे यादि आहे that woman, and they said she had love marriage. We couldn't imagine where love could fit in, where, which part. इश्क त कोन ॾिसंदो आहे न, कारिया चङा लैला बि कारी हुई। लैला बि कारी हुई न? कारी त हुई, but she had maybe some looks or some features or something. This one had no features, no nothing, no redeeming feature. Anyway, no, there's certain things stick out in the mind. One always remembers. हैरत थींदी हूंदी तने कि छा नज़र आया। This woman's, her whole thing is still in one's mind, fresh. Oh, Siddiqui Sahib was the manager, Court of Wards. So Siddiqui ji zaal hui. So that I'm just mentioning by the way कि मतलब अजीब अजीब मानो कि याद रहने ना कई कई अजीब गरीब वाक़यात। तो गवर्नमेंट जो प्रोग्राम असां के हिते आनंद जो कोन हो 44 में, हिते असांजे गैर हाज़िरी में सरबराह हो यानी रीजेंट, then people rose against him. हिते थोड़ो माण्हुनि शोर कयो, रिवोल्ट हिकु नमूने खां एक हद ताईं जी बग़ावत जे ख़िलाफ़। ये असांजो भट्टी और लंगर खाना, दे रिफ्यूज टू ईट दैट, उनखे तोड़े छॾियो ताफ़क के, थोबी के, द स्टोन छा सिंधी छा चवंदा उनखे, griddle, but made of stone, We don't bake bread on stone tavi, big one like this. पचाइण जे लाइ, जी पचाइण जे लाइ, not one is tavi, tavi is iron, this is पत्थर जी आहे। अच्छा अच्छा, उन ते मानी पचाइण, उनखे टोड़े छॾियो, सभु टोड़े छॾियो। So the government was obliged to bring us to appease those people, and then we never went back, so our education was left. So तव्हां जॾहिं मोटी आया आहियो त उन महिल तव्हांजी छा उमिरि हूंदी?
मोटी December 44 में you have to work it out. I don't know, I'm weak in mathematics. I always failed. 22 साल? न 22 का थे? न अञा नंढा? No, 27, 37. So the 17, 18 years. 17, 18, around that. जी. अच्छा साईं, तव्हां जॾहिं मोटी आयो त हिते सां तव्हांजो राब्तो कोन हुयो ऐं तव्हां बिल्कुलु शहर जी ज़िंदगीअ मां हिते आयो, उहो सही आहे त पंहिंजो जेके क़बाइली रस्मो रवाज आहिनि उन्हनि खे यकीनन तव्हां वाक़ुफ़ No, people were coming and going. अच्छा, तव्हांजो राब्तो रहियो उन्हनि सां? They were coming and they would stay there and meeting. तव्हांजो राब्तो उन्हनि सां रहियो? तव्हांजे अचण खां पोइ जेका बि बग़ावत हुई उनखे तव्हां ख़तमु करायो? हा, पोइ ख़तमु थी वियो. The government said कि बाबा now करीब साल खण तव्हांखे को ट्रेनिंग ॾींदासीं एडमिनिस्ट्रेटिव हे हू ताकि पंहिंजे ट्राइब खे लुक आफ्टर करे. हो बि डेरा बगटी में यू कान स्टे, सियारे में सिबी, उन्हारे में क्वेटा. अच्छा, ही सभु तव्हांजे लाइ वर्कआउट कंदा हुआ? हा, वर्कआउट करे पोइ 48 रखियो को रिटायर्ड AC जो कि अॼुकल्ह चवंदा आहिनि न असिस्टेंट कमिश्नर, देसी माण्हू आहे मगर रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल ताकि my companion would be training and deportment and do this and do that, this is acceptable, hinka milo he karo. Just for the formality of it. So 46, no 45, I'm sorry, 45 mein ye aisa ho Quetta and Sibi, and 46 April mein shayad, then formally I was installed as Sardar and regent was retired. So I got full Sardari authority. Again, at the age of 18. तमाम नंढा हुयो तव्हां? जी. एतिरनि सरदार जॾहिं थिए थो त रिवायतनि माण्हू उनजो चयो था वठनि या तव्हां एडमिनिस्ट्रेटिवली या इंतज़ामी तरह सां भी उन्हनि खे पंहिंजे? इंतज़ामी तरीक़ा तो इमीडिएटली तो ना, आस्ते आस्ते in practice, when you are putting into practice all the things, rasam, rivaj, faisla, chara, tora, jirga, it comes by experience, not by... जेको जिरगो थिए थो पियो, तव्हां भी कयो था पिया, you are known for that, ऐं जहिड़े नमूने सां तव्हां माण्हुनि खे ॿुधो था, उन्हनि जा फ़ैसिला था कयो, अहिड़ा ई जिरगा सिंध में बि थियनि था, उते ॿिया बि सरदार आहिनि, त इहे जेके सूबनि जे दरमियान या इंटर प्रोविंशियल इहे जिरगा जॾहिं थियनि था उनमें बि तव्हां पार्टिसिपेट कयो? मां मेंबर हुअसि न, जेकबाद में साल में 2 भेरे हूंदो हो. अच्छा. सियाले में ऊन्हारे में. हा. And I used to participate. The first time was before Pakistan, 1946. And there were most Baloch Sardars from Upper Sindh. Acha. Mazari Sardar, you know, all those who were... वो सब ते वेंदा? सब ते वेंदा. त तव्हांखे यादि अचनि था उन ज़माने में कहिड़ा कहिड़ा सरदार? Yes, all these. There were Mazaris, Nawab Khan Chandyo. First time I met him there, and after that he didn't come. Then Kosa Sardar, huge fat one. On the kursi be special, that was constructed so that he fits in, you know, it was that broad, 2 or 2.5 people could sit in it. But Aji, Ilahi Sharif ho, and he never argued, never anything, he was just sitting there. But Lawal Veo. And Jakrani Sardar ho, Malang Manu. ॿियो खोसा हुआ and Suryani, Sardar Chakar Khan, Suryani, and ॿिया बि हुआ. वो कहिड़े क़िस्म जा फ़ैसिला कनि? सरदार नूर मोहम्मद बिजरानी. अच्छा. जेतिरा बि जेकॾहिं सभिनी सूबनि सां तालुक़ रखंदड़ जेकॾहिं जो भी हो दंगई हुआ ना, जो ट्राइब्स ऑन द बॉर्डर ऑफ जेकबाद अराउंड,
हो सब उन जो मेंबर हुआ छोकी हुन जो ट्राइबल इंटर ट्राइबल मामलात हुआ they would sit and decide all matters जैसे बिल्कुल बुगटी और जखरानी जो को मामलो या बुगटी जो बुलेदी बिजरानी सा तो it would be decided in that जिरगा तो उनमें ज़्यादातर कारोकारी जा धाड़े जा चोरी जा taking away livestock and otherwise general if कत्ल खून जो so वो सब फैसला होते उन जिरगे में इन्हनि सभिनी सां पोइ तव्हांजी मुलाक़ात थींदी मुलाक़ात थींदी several days we would be camped every Sardar would have their own camp or we had our own house it is still there but in Khandrab district में several years we have not been to Sindh because after it was this jirga system was over it's over then once a year we would have a similar jirga in Fort Manru. Fort Manru is the hill station of Dera Ghazi Khan and all the Dera Ghazi Khan Sardars, Baloch Sardars, neighboring Balochistan Sardars we would congregate there and decide these intertribal matters. Sir, Pakistan ठही वियो तव्हां पंहिंजे कबीले जा सरदार बि रहियो पर तव्हां अमली सियासत शुरू कई पाकिस्तान खां पोइ ठीकु ऐं अमली सियासत जॾहिं तव्हां हुन में हिसो वठणु शुरू कयो तॾहिं उन खां पोइ बि बलूचिस्तान 23 सालनि ताईं सूबो कोन ठही सघियो सही ऐं तव्हां हुन जे लाइ इलाही जिदोजहद कई ऐं तक़रीबन जुलाई 1970 में बलूचिस्तान खे जेको सूबे जो दर्जो मिलियो तव्हां हिनखे हक़ीक़ी बलूचिस्तान सम्झो था या केतिरा माण्हू जेके आहिनि से चवनि था त हिन जूं जोग्राफी जेके हदूं आहिनि उहे न आहिनि जेके हुअणु खपनि तव्हां हिननि जी सां एग्री था कयो सही है यस हे त हद जो आहे न सीम हे त इंपीरियल पावर्स हो पंहिंजे सहूलियत जे लाइ पंहिंजे ज़रूरत जे लाइ हिननि खे ठाहिया आहिनि now for example international borders with Iran on the side be Irani Balochistan inside British Balochistan and Pakistani Balochistan po Afghanistan Afghani Balochistan in paase asanjo Balochistan the Durand line and McMahon line were drawn to divide these people according to the needs of the British and the need of the imperial power and their needs they imposed on Iran and imposed on Afghanistan which were weaker powers and to this day that continues. Now these are all artificial impositions and divisions but it's unfortunate if you go to Africa you find today one tribe in several bits and pieces in this and this and this and this again imperial divisions सॼी दुनिया में अंग्रेज़नि जाते काथे यूरोपियन या अंग्रेज उन पंहिंजे मफ़ाद जे लाइ कयो नेशंस विराए छॾियूं माण्हू विराए छॾियूं मुल्क विराए nations into several parts here we have 3 Balochistan just a classic example ईरान में आहिनि बलूचिस्तान में आहिनि Kurdistan ॾिसो न they are in 5 parts Yes. They are under 5 different countries and different systems. The Kurds, poor Kurds, to this day they have not been able to get together. They have not been allowed to, although they are much more than the Baloch, the total Kurd, and very much warrior types and fighters and all that. But they are being kept down by force. Jinnah Sahib वायदो कियो when he came to Balochistan first time कि बलूचिस्तान के भी सूबाई दर्जो तो हो तो गुजारे वियो लियाकत अली खान आयो he said yes we will give full provincial status to raise Balochistan to that status. छा पियो उन्हनि खे कहिड़ी शइ रोके पई जो न पिया ॾियनि स्टेटस सूबे जो खबर न I don't know I was too young to know anyway they planned and then they started off with a
council, nominated council, with 2 advisors, so that we get some, knowledge or how to run things and all that. So we had a legislative council of sorts, and with advisors. But before that, in 47 Pakistan came into being. In the middle of 48, I was sent off to Lahore to the newly created CSP Academy. For administrative training, CSP. So I was to be made a CSP, like ICS in India. So this was follow-up. Racecourse Road, some building of Dinga Singh building, very nice house. He was a great contractor. He built a first-class house. It also had a swimming pool. So the academy was there, and some of the youngsters were in their own homes or outside, but I had a room upstairs, and for several months we were there, and G. Muinuddin, he was our director, one of the very old ICS persons, and when his daughter married, I still remember we were all invited, and we were also requested to come and help out, in decorating the house on the canal. To General Sherali, I think. She was married to General Sherali, or who? Probably Sherali, yes. It's ages ago, but I still remember. Anyway, after... No, siyasat mein na. We are still away from siyasat. It's bureaucracy, no? He was being trained for bureaucracy. Now, at that time, I noticed one thing. Bengal is more than 50% of Pakistan, but in that academy, in the first batch, this is the first batch, mind you, of CSP, there were only one genuine Bengali from Bengal, and the other one was a Calcation. There were 2. Now there was one from Sindh, Zafri, Muzaffar Hussain. I think there was only one. One from Sindh. Sindhi. I can't recollect anybody else. Zafri, I knew he had just married. He has his beautiful wife with him, with green eyes. Green eyes or blue eyes? Anyway, they're no more husband and wife. And there were number of them from Punjab, Subah Sarhad, number of them Muhajirs. I was from Balochistan. And then I was, it struck me, he said, well, Pakistan is made for everybody and equal rights. Here, such a disparity. Bengal is 55% or 60%, and they have one genuine Bengali. If you add the calculation too, population bhi vadhika manu hikdoa, and we were total about 25, 26, under 30 boys. Majority Punjab and Muhajirs, all others. So that always kept me thinking, and that young Bengali lad was quite friendly with me. And in later years, when I went to Dhaka, this is just before the military action, I was invited by Sheikh Mujib in February 71. So I puchho ki baba wo Sajitul Bar Chaudhary ka thya. So I was told ki he is head of the MBR, Member Board of Revenue. So I went in and daftar mein, to party wala machuk baba sahib kaun hai? Ji Sajitul Bar Chaudhary sahab, haan milna chahta hu. Sahab aap appointment le. Maine kaha appointment koi nahi hai. Kehte aap itni milenge. So I wrote my name, I said chit de do unko.
So reluctantly he went in and he said, "Kaun aaya hai?" Immediately the door opened, he rushed out, came and embraced me and took me in, and then we talked. I said, "If you recollect, you were the only Bengali, genuine Bengali, in spite of being more than half, and we were wondering what would happen, and today